Hello and welcome everybody. सबका स्वागत Penta Talk Show में and I would like to wish everyone a Merry Christmas. मैं हूँ ShaDeSLaYeR और मेरे साथ जुड़ रहे हैं the one and only Cracky. What's up? कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुपर एक्साइटेड. मैं बताना चाहूंगा जनता को बिकॉज वी हैव वंस अगेन द पिंटा एमेच्योर लीग जो आप सभी के लिए हर महीने आता है एंड वंस अगेन वी आर बैक. आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द BGMI टूर्नामेंट जो अब हमारा शुरू होगा, जो हमारी लीग शुरू होगी एंड दैट्स गोना बी इनसेन बिकॉज इतने सारे नए टैलेंट्स. Indeed, man. A little bit of an introduction. जो audiences हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज, जिसने amateur league पहले बार देख रहे हैं, it's a tournament for amateur and semi-pro players exclusively. ऐसा है कि any salaried athlete is not allowed to participate. तो ये बहुत सा यूनिक अपॉर्चुनिटी है फॉर एस्पायरिंग esports athlete ताकि जर्नी स्टार्ट कर सकें, get recognized in the community among the top teams and just pretty much have a ball and maybe the start of a long and successful career in esports. And ये जो हमारा tournament league है वो Penta Amateur League 6 महीने चल रहे हैं in total for season 1, जिसमें we have a lot of titles lined up. Every month we're gonna have a new title. पहले month में जो अक्टूबर में शुरू हुआ था हमने WCC 3 और GT Sport देखे. Last month it was Valorant और इस बारी दिसंबर में होगा BGMI and I'm very excited Cracky. This 3 दिन जो finals होने वाला है 28th to 30th, it's gonna be out of this world Cracky. आई मीन सारी बातें सबसे पहले आपने जिसकी बताया यहाँ पे सारी बातें एक तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स चीयर्स बिकॉज इतना अमेजिंग लीग आप सभी के लिए पिंटा एमेच्योर लीग आप सभी के लिए आया है एंड जितने भी लोग हैं, जितने भी नए लोग हैं, अंडरडॉग्स हैं, 5 लाख रुपए हर महीने दिस ऑन द लाइन. लाइक 30 लाख 6 महीने के लिए डेडिकेट किए गए हैं जस्ट फॉर यू गाइस. डजंट मैटर आप कौन सा गेम खेलते हो, डजंट रियली मैटर. पीसी पे है, मोबाइल पे है, PS4 पे है, कंसोल पे है, कहीं भी है, वी हैव टूर्नामेंट्स फॉर यू गाइस. एंड आज के दिन हम बातें करने वाले हैं अबाउट द टीम्स जो BGMI में हैं, जो खेलने वाली हैं फाइनल्स में. बहुत सारी टीम्स आई थी एंड उनमें से 16 बेस्ट टीम्स का आपको गेम प्ले विटनेस करने को अब मिलेगा. Indeed, man. टूर्नामेंट तो एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं कि कब शुरू हुआ. दिसंबर का बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में पेंटा एमेच्योर लीग. Essentially 10 दिन था registrations at the beginning of the month. 15 to 23rd को 2 राउंड हुए हैं क्वालिफायर्स के और अब हमारे साथ है 16 of the best amateur teams in the country और 16 teams are gonna go up against each other 3 दिन में 28th to 30th December. It's gonna be super exciting. A lot of these teams in लोगों के लिए this is going to be one of the first opportunities where they're pretty much in the limelight. तो बहुत सारा pressure भी होगा इन लोगों में and it pretty much is going to come down to the team that's going to be able to quickly adapt in these situations and very importantly keep their cool. ये कोई 1-2 मैप का finals तो नहीं है. It's multi-maps. We'll get to the details in a bit, but essentially it's happening over 3 days, so consistency is going to be key, and to be able to consistently perform, it's very important that they not only study their opponents on what they've done so far, but importantly be able to do what they do in the pressure situations. Cracky. आई मीन आपको अपना मेंटल शांत रखना है. दैट्स द मेन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीम गेम बहुत जरूरी रहने वाली है बिकॉज द वर्ड टीम इटसेल्फ मींस यार टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. एंड आज के दिन हम बातें करने वाले हैं सारी टीमों के बारे में और साथ ही साथ इनके परफॉर्मेंस को भी हमने जो रिकैप किया हमारे पास है वो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सारी टीम्स परफॉर्म करके यहां तक फाइनल तक पहुंची है. एंड यस एमेच्योर टूर्नामेंट है पर प्राइस पूल तो छोटा तो गारंटी नहीं है. It's 5 lakh rupees on the line in the finals, जिसके ब्रेकअप ऑफ कोर्स विनर को मिलेगा
2 lakh, second place 1,20,000, third and fourth place get 50,000 each, and fifth to eighth place are going to walk away with 20,000 rupees each. So कम से कम आधा लॉबी को प्राइस पूल गारंटीड मिलेगा ग्रैंड फाइनल्स में. एंड फॉर एन एमेच्योर टूर्नामेंट, just the opportunity of being getting recognized is huge. But this, I can say, this is cherry on top, that you also get to walk away with some massive prize money as well, Cracky. जो यहाँ 5 लाख तो है, साथ साथ एक टाइटल भी है जो यहाँ पे पेंटा एमेच्योर लीग बीजीएमआई के टूर्नामेंट के आपको विनर का टाइटल मिलेगा. सो टॉप 8 टीम्स, आई मीन दैट्स ग्रेट. 16 टीमों में से 8 तो जैसे कि आपने बोला आधी लॉबी लेके जाएगी. दैट्स ग्रेट बिकॉज यूजुअली वी डोंट सी दैट. हमको ऐसे टूर्नामेंट्स ना ही देखने को मिलते हैं कि इतनी सारी टीम्स के लिए एटलीस्ट 20,000. आई मीन 20,000 इज बिग, नॉट दैट बिग, बट हाँ इट्स बिग, इट्स क्वाइट गुड बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो सैलरीड है. They are the amateurs, grassroots level players हैं जो यूजुअली फन के लिए और अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए और साथ ही साथ अपने स्किल्स को शोकेस करने के लिए परफॉर्म करते रहते हैं और अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं. और आज के दिन हम बात इन्हीं की कर रहे हैं बिकॉज इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है. पेंटा एमेच्योर लीग के द्वारा ये जीत सकते हैं अप टू 2 लाख अगर फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं. 5 लाख का बड़ा प्राइस पूल है जो कि स्प्लिट होगा, बट यस 2 लाख सबकी नजरें वही रहने वाली है. Cracky. And ये भी important है कि ये लोग yes amateur teams है, just like आपने बोला थोड़ा casual खेलते हैं on a day to day, but जब esports में competitive खेलते हैं वो play style थोड़ा अलग होता है. The way you approach each map, approach each situation is very different than the pub matches that you play on a day-to-day basis, and that is I think that is going to be crucial here for the newer teams that are coming in, ki wo how they're able to transition and how quickly are they able to adapt to being able to play that, because that is going to put them at a very advantageous position as compared to the rest of the lobby. So yes, बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 राउंड, बहुत सारे टीम्स खेले हैं हमारे साथ in December for BGMI. I'm super excited to see what the finals has in store for us. But before we jump in and have deep dive into each of the 16 squads that are going to be playing the finals, why don't we quickly have a recap and have a look at how the qualifier matches went down, who fared how, just to give you guys and keep you guys posted on up to speed on where we stand and what is it that we can expect in the finals. So let's quickly have a look at the highlight video. पेंटा एमेच्योर लीग बीजीएमआई में हमें सारी टीम से काफी अच्छे मैचेस देखने मिले ड्यूरिंग द क्वालिफायर्स. एंड क्वालिफायर्स में कुछ अमेजिंग प्लेस के बाद वी नाउ हैव द 16 टीम्स जिन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और फाइनल्स में अपना स्लॉट बुक कर लिया. चलिए एक नजर डालते हैं इन 16 टीम्स पे. रेट्रो esports, 2 chicken dinners and 49 total finishes. अपने शानदार गेम प्ले और मूवमेंट स्किल्स के साथ इन्होंने क्वालिफायर्स में कुछ बेहतरीन गेम प्ले दिखाया और फाइनल्स में अपनी जगह बनाई. हंग्री फॉर किल्स, 1 chicken dinner and 48 total finishes. यूटिलिटी का एकदम सही इस्तेमाल और प्रॉपर रशेस की बदौलत इन्होंने फाइनल 16 टीम्स में अपना स्लॉट कंफर्म कर लिया. शोगन esports, 2 chicken dinners and 47 total finishes. अपने प्रिसाइज गन प्ले और अच्छे कोऑर्डिनेशन की बदौलत इन्होंने क्वालिफायर्स में काफी अच्छा परफॉर्म किया. फाइनल्स में आते हुए ये टीम से क्या देखने मिलता है, विल सी सून. टीम रेड क्रॉस, 1 chicken dinner and 58 finishes. कुछ एग्रेसिव गेम प्ले के साथ क्वालिफाई करने के बाद रेड क्रॉस इज डेफिनेटली वन ऑफ द टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन द फाइनल. आईक्यू ऑफिशियल, 1 chicken dinner and 45 finishes. गन ही नहीं, थ्रोएबल्स का भी अमेजिंग इस्तेमाल करती ये टीम क्वालिफायर्स में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद फाइनल्स पहुंची. It would be interesting to see what IQ official has in their bag for the finals. Death officials, 1 chicken dinner and 35 total finishes. कुछ बड़े ही पेशेंट एंड टैक्टिकल गेम प्ले के साथ डेड ऑफिशियल्स ने अपनी जगह बना ली फाइनल्स में. वॉरलॉक esports, 1 chicken dinner and 42 total finishes. इस टीम की शुरुआत हालांकि बहुत बढ़िया नहीं थी, बट उन्होंने इंस्टेंटली पिकअप किया, बड़ी जल्दी ओपोनेंट्स को अपनी प्रेजेंस फील करवाई और इवेंचुअली फाइनल्स में एंटर कर गए. गेन esports, 2 chicken dinners and 40 total finishes.
इस टीम ने अभी तक काफी अच्छा परफॉर्म किया है एज दे हैव ऑलवेज फिनिश्ड इन द टॉप 10। देखते हैं फाइनल्स में इनसे कैसा गेम प्ले देखने को मिलता है। रश Esports, 2 chicken dinners and 57 total finishes. With amazing gun skills and strategies, it would be interesting to see how Rush Esports will compete in the finals. RCD Esports, multiple chicken dinners के close आए and had 46 total finishes. फाइनल्स में ये टीम दूसरी टीम्स को टफ कंपटीशन दे सकती है since they have the capability of spraying down their opponents from a long distance. Big Brother Esports, 3 chicken dinners and 30 total finishes. Big Brother Esports can pull off both close range and long range fights, जो फाइनल्स में बाकी टीम्स के लिए खतरा साबित हो सकता है। Kaizen Esports, 3 chicken dinners and 65 total finishes. Kaizen Esports एक और स्ट्रॉन्ग टीम है जिन्होंने ये टूर्नामेंट में काफी डोमिनेटिंग गेम प्ले दिखाया। देखते हैं क्लच फिनिशेस पिक करने वाली ये टीम फाइनल्स में क्या करती है। Atmos Esports, 2 chicken dinners and 54 total finishes. जिस तरह के क्लोज रेंज फाइट्स हमने इनकी तरफ से देखे हैं, अगर एटमोस बिल्कुल वैसा ही खेले फाइनल्स में तो इनका भी अच्छा खासा चांस हो सकता है। वॉर गॉड रायट्स, 3 chicken dinners and 36 total finishes. गन के साथ साथ नीड्स का भी अच्छा प्रदर्शन दिखा के वॉर गॉड रायट्स ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। रेड एक्स ऑफिशियल्स, 2 chicken dinners and 52 total finishes. काफी बढ़िया टीम प्ले और यूटिलिटी यूसेज के साथ रेड एक्स ऑफिशियल्स ने फाइनल्स को अपना स्पॉट कंफर्म किया। लीथल राइवल्स, 3 chicken dinners and 32 total finishes. अच्छे स्प्रे डाउन्स एंड फ्रैग्स के साथ लीथल राइवल्स ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब देखते हैं फाइनल्स में लीथल राइवल्स बाकी टीम्स को कैसे काउंटर करेंगे। एंड दोज वर द 16 टीम्स। वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फाइनल्स। और आप सब देख सकते हैं फाइनल्स लाइव पेंटा Esports के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और लोको चैनल पर ऑन 28, 29 and 30 December. Okay. If I wasn't excited enough, that sure has got me pumping, cracky. बहुत सारे teams It got me goosebumps. Yes, indeed, and they've essentially been going at it for the entirety of the December, right? बहुत सारे matches थे, बहुत सारे action on all maps, Erangel, Miramar, and Sandhawk, and I think a good variety of play styles also. हमने देखा a lot of utility usage from a few of the squads, couple of squads जिसमें 30 kills थे but 3 chicken dinner, so kind of shows a slow methodical play. We also saw a lot of teams that had like 8 chicken dinner, 50 plus kills, which shows it's a very aggressive play style. They like to take their fights early. So it's all gonna come down to being like this amalgamation of play styles all coming together in one single server. It's going to be pretty exciting to see. Yes, बहुत सारे लोग they would have studied their opponents, matches देखे होंगे. Very importantly, most of these matches were all the matches were off stream. So there's not a lot of data for these players to go back on. Yes, amateur teams है. अगर pro teams होते तो देख लेते हैं सारी tournaments, awards, clips वगैरह, and you have an idea. ये लोग यहाँ drop करते हैं, ऐसा play style, ऐसा rotations करते हैं, and this is how they adapt. But going in, it's going to be pretty much the unknown, right? My guesses are पहला दिन का 4 maps तो it's going to be to figure out कि what exactly is going to enable our play style to stand out and be able to be successful the most. What do you say, Cracky? I mean, जी हाँ, देखिए, simple as that, ये है ही unknown battlegrounds mobile India, right? You don't know what enemy has in the mind. रीड करा है आपने काफी समय से, इट्स फाइन, लाइक आप देख रहे हैं उनका प्ले स्टाइल कैसा है, बिकॉज लॉबी में जितनी भी टीम्स खेलती हैं हमेशा से उनको पता है कि सारी टीम्स का प्ले स्टाइल कैसा रहा है. कोई टीम एक नॉक करती है, कोई एग्रेसिव आ जाती है. आई मीन कुछ टीम्स होती है एक नॉक करके भी दे डोंट पुश. सो इट्स ऑल अबाउट ऑन दैट टैक्टिक्स, साथ साथ द स्ट्रैटेजीज दैट यू पुट इन एंड द टीम वर्क. सारी चीजें फाइनल्स में बहुत ज्यादा मैटर करेंगे, बिकॉज एवरी सिंगल प्लेयर, एवरी सिंगल मैन इज गोना ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि वो ग्रैब करे 2 लाख का एक बड़ा प्राइस पूल, विच इज ऑन द हाईएस्ट स्टेक. सो आई रियली फील कि जैसा भी आपका डू व्हाटसोएवर इट टेक्स, जैसा भी आपका दिन रहा हो, जैसा भी आपके मैचेस रहे हो, forget everything, just put in your best in those finals, because आपके पास हर दिन केवल 4 ही गेम्स रहने वाले हैं. टोटल ऑफ 12 मैप्स हमको देखने को मिलेंगे, एंड उन 12 मैप्स में से you have to get the maximum points that you can get. Indeed, man. And another thing to touch up on, especially matches and tournaments at the amateur level. ये लोग बहुत सारे pugs करते हैं than scrims, so they're used to Erangel, right?
जब भी बात करते हैं एरांगल, यस एरांगल खेलते हैं, बहुत पब्लिक मैच मेकिंग गेम्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स सब मैप पूल पे करते हैं, पर मिलता है एरांगल. Yeah. बट टूर्नामेंट मैचेस में स्पेशली इन द फाइनल्स हम खेल रहे हैं एरांगल, मीरामार, सैनहॉक एज वेल. तो प्ले स्टाइल्स भी थोड़ा अलग है, टेरेन तो totally different. Sanhok तो बहुत fast paced है, and we all know Sanhok is notorious for people who do manage to get into the grass, right? Those final circles are absolutely horrendous for third parties, fourth parties. You never really know exactly how it's gonna go. So play style map से map बहुत अलग होता है, and this is gonna be the opportunity for teams that have a versatility in terms of map pool. I think they are the ones who are going to be able to stand out and shine, because ये जो हो रहा है finals हो रहा है 3 दिन में, it's a battle of attrition. ये sprint नहीं है कि 1-2 chicken dinners ले ले और जीत गए हैं. ये 3 दिन, like you said, 12 मैप होने वाला है, and consistently being able to churn out results. जो matches पे already momentum है वो वैसे ही रिजल्ट निकल जाएगा. बट द मैचेस वेयर द बैक्स अगेंस्ट यू, those matches are the one that's going to eventually decide if you're a championship squad or not. तो है हमारे पास 16 squads. चलो हम let's dive straight into the squads and see who our 16 squads are and how their journeys have been so far through the qualifiers and into the finals of Penta Amateur League BGMI for December. पहला जो squad है वो है Atmos Esports. Cracky, take it away. Oh, Atmos Esports. Look at the total amount of finishes. भाई 54 finishes इन्होंने निकाले हैं, 54 finishes. That's fucking huge. And आप माने जिस प्रकार से इनके हर एक प्लेयर ने परफॉर्म किया है, मैं मानता हूं यहाँ पे असॉल्टर मैक्सिमस ओपी के तरफ आप एक बार देखें, 26 फिनिशेस अकेले निकाले हैं विद द सपोर्ट ऑफ देयर टीममेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ देयर आईजीएल्स एंड द स्ट्रैटेजीज बीइंग बिल्ट अराउंड द गेम. तो आई मीन ये टीम पोटेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है, बिकॉज द गन गेम, the strategies would have been amazing to pull out those amazing finishes from the game. Indeed. See, it's Ashno for the win. My bad. Is 13 finishes. Ace OP, who's on filter, also has 11 finishes, and Maximus OP has had an amazing qualifier so far. 2 rounds में मिला के 26 finishes, is doing really well for himself. Let's have a look at the results overall. 54 finishes for Atmos Esports, and round 1 का matches में for group N they were placed first, जिसमें Miramar के map में they were first on the leaderboard with 19 finishes, 34 finishes in total. Going into the semifinals as well. They're gonna top group D after 4 maps on Erangel, Miramar, as well as Sanhok and Erangel, जिसमें in Sanhok they were first again. सब मिला के 20 finishes. Atmos Esports are gonna be a strong contender going into the finals, Cracky. Yeah, for sure. And look at the Miramar game. I mean, round 1 में 19 finishes एक Miramar के game है. I mean, that was amazing. That was indeed great. And यही चीज अगर हमको वापस से देखने को मिलती है, because on the maps, right, जो हमको finals में देखने को मिलेंगे, उनमें हमको 4 maps में से 2 तो Erangel ही देखने को मिल जाएंगे. And आपके लिए Erangel को strong करना, जो कि एक default map है, that's going to be the main priority. Miramar आपका अच्छा है, and you just wish कि आपके लिए आने वाले Miramars भी काफी अच्छे जाए. If you see on the stats, they were in the top 8 every single time. कभी first आ रहे थे, कभी chicken dinner था, कभी top 3 आ रहे थे. So it was all about the consistency, जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा रहने वाली in the grand finals, because consistency is going to be the main key to the success. Because एक chicken निकाल लिया, बाकी मैप्स में आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, that's not going to work out. Indeed, man. चलो देखते हैं हमारे दूसरे स्क्वाड, वो है Big Brother Esports. 30 finishes, slightly on the lower side, which kind of indicates that they like to play their maps slow.
slow build करे, get your loot up, rotate around fights into zones, and sometimes ऐसा situations होता है कि you don't really want to be in the thick of things initially, क्योंकि Yeah. both there is a lot of factors that is out of your control. You get into these fights early, and if you do not find an opportunity to recover back, it's an easy third party opportunity for someone, and finishes alone are not going to be enough for squads that are looking to grind their way through these 12 maps in the finals. So it's going to be interesting to see how Big Brother Esports plays in the finals, whether they're going to continue with a similar play style, or if they are going to look to change things up and be a lot more aggressive in the finals. Only time will tell. Let's also have a look at their performance in detail a bit. They finished round 1/3 in Group I with 12 finishes, where they did get first in Erangel as well as Sandhawk, but not too many finishes, however. So, like I said, they're more on the cautious side, avoiding Yeah. the unnecessary fights, and giving a lot more priority on the placement that they managed to get at the end of each one of these matches. And in the semifinals, maybe they finished third in Group C. Just maybe they were able to get first in Sandhawk with 11 finishes, which shows for a fact that yes, they do have the potential to play aggressive when necessary, but it's not necessary their go-to play style for all these matches. So let's have a look at the next team in line. It's Death Officials currently. जी हाँ, डेथ ऑफिशियल्स की अगर आप बात कीजिए तो 35 फिनिशेस इन्होंने निकाले अपने सारे क्वालिफाइंग राउंड्स में। आईजीएल की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ओवरऑल देखने को मिली, दैट्स रियूक। उसके साथ साथ सपोर्ट असॉल्टर एंड उनके साथ साथ दूसरे सपोर्ट जो हमको रैग्नार देखने को मिले, हर एक प्लेयर ने अपना बेस्ट दिया। आई मीन इफ यू सी दिस टीम, एक प्लेयर ने ज़्यादा अच्छा नहीं किया तो सारे प्लेयर्स ने मिलके एक साथ अपने लिए जगह बनाई है फाइनल्स में। द टीम वर्क जो हमको इनके फिनिशेस से देखने को मिल रहा है, आई वुड लव टू सी कि हर मैच में किस प्रकार से खेले हैं। बिकॉज बिग ब्रदर की अगर हम बात करें तो उनके आईजीएल ने स्लो स्टार्ट रखी थी, भले ही उनको चिकन मिल रहे थे, बट हाँ उनकी तरफ से ये था कि उनको मेनली क्वालिफाई करना है पॉइंट से, जो उनके प्लेसमेंट पॉइंट्स रहेंगे, और साथ ही साथ विद दोज मिनिमल फिनिशेस। बट देखते हैं इस टीम के कितने हमको फिनिशेस किस मैचेस में देखने को मिले हैं, कौन कौन सी टीम में कौन कौन से मैप्स में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इफ यू सी इरांगल में फर्स्ट आए थे अपने पहले गेम में, और उसके बाद चिकन लेने के बाद दे वर एबल टू फाइंड समथिंग फॉर देमसेल्व्स, एंड आई रियली फील कि जैसे जैसे ओके सो वी माइट हैव सम स्मॉल चेंजेस। यहाँ पे बात करें इरांगल पे 9th आए थे एंड 4 फिनिशेस मिले। सो देखिए कंसिस्टेंसी इनकी तरफ से जरूर देखने को मिली थ्रू आउट द होल गेम। हमको भले ही इनकी तरफ से वो डेमोनिक परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, बट हाँ दे वर प्रेटी कंसिस्टेंट। इनकी तरफ से एक स्लो स्टार्ट ही रही, पहले 9th पोजीशन पे फिनिश किया, उसके बाद सेकंड आए, फिर थर्ड आए। पहले मैच में भले इरांगल इतना अच्छा नहीं किया, बट उसके बाद मिरामार एंड सिनॉक उन्होंने टॉप 3 फिनिश किए, विच इज अ ग्रेट थिंग। एंड इफ यू सी इन द सेमीफिनाले ग्रुप बी में हमको इनकी तरफ से फिर वही कंसिस्टेंसी देखने को मिली, पहले सेकंड आए, देन दे गॉट द चिकन विद 8 फिनिशेस इन द मैप ऑफ सिनॉक। एंड सिनॉक ओवरऑल इनका हमेशा ही अच्छा गया है, दोनों में 8-8 फिनिशेस इन्होंने लिए हैं। सो यस दैट्स प्रीटी गुड थिंग फॉर देम, एंड आई रियली फील कि हर एक टीम को सामने वाली टीम से थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। अ स्लो स्टार्ट वुड बी अ ग्रेट थिंग, बिकॉज बीइंग एग्रेसिव जहां पे आप नहीं जानते सामने वाले क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, आई मीन दैट कुड बी अ बिग सरप्राइज। Indeed, Cracky. And one more important thing, something that I already touched upon है कि information BGMI में key. There's nothing more important than information about your Yeah. opponents, and knowing drop locations, knowing rotation patterns. These are things that ये लोग पहले दिन they're going to use it just to get adjusted and get this information. And I think day 2, day 3 is when we will see squads settle into a rhythm
and जी. get a feeler and understanding of how these maps are going to play out. And like you said, death officials have not been the most consistent of squads looking at their results. They've come first, second, fifth, ninth, tenth, so that's a lot of variation there, and that is something that they're gonna have to change coming in to the finals, because if they are to come out of this on top, they're gonna have to be a lot more consistent throughout the 4 maps on each of the 3 final days. Let's move on to the next squad in line, and that's gonna be Gain Esports. 40 finishes. Kalan on IGL with 13, Tony on Assaulter with 10, Flash on Scout with 7, and we finally have Arceus, जो support खेल रहा है with 10 finishes. Let's have a look at the squad in a little bit more detail. It's round 1 में they were first in Group O with 22 finishes. Again, not a squad जिसने बहुत सारे finishes लिए हैं, but they've got the job done. First आए थे for Sandhawk maybe in round 1 semifinals में Group B. They were finishing 4th with 18 finishes, जिसमें Miramar में they came in first, Sanok में second, but दोनों Erangel maps में उतना अच्छा performance नहीं था. They only managed to get 8th and 9th. So this is again a squad that falls under the second category that I mentioned earlier, Cracky, जो Erangel में, yes, it's a well-known map, but they're strong on Miramar and Sanhok. So इन लोगों के लिए वो दोनों maps बहुत crucial होंगे ताकि they get maximize their performance, continue to perform like they have in round 1 and semifinals, while stepping up their performances on Erangel, and that I think is a perfect sweet spot here for Gain Esports to perform well in the finals. Let's move on to the next squad in line, जो है Hungry for Kills Cracky. हंग्री फॉर किल्स की तरफ से हमको 48 फिनिशेस देखने को मिले, जो कि बहुत अच्छे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष की तरफ से मैक्सिमम फिनिशेस हमको देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक असॉल्टर का रोल खेलते हुए हमको नजर आते हैं, जो कि एक मेन असॉल्टर हैं टीम के. उनकी तरफ से 17 फिनिशेस आए हैं, एंड दिस शोज की गन गेम, अगर आपकी टीम के पास इंफॉर्मेशन है, सपोर्ट आईजीएल की तरफ से अच्छी पोजिशनिंग है, असॉल्टर इज गोना डू द जॉब डन. उसके बाद आईजीएल और उनके साथ साथ स्काउट आते हैं, जो कि हैं सूजल और स्टोनर रिस्पेक्टिवली. आईजीएल के पास 12 फिनिशेस हैं, विच इज आई फील good enough. साथ साथ स्काउट who just loves to get the information for the team, and उसके साथ साथ उस information ने advantage भी create करके दिया. If you see, while he is scouting, he is getting the first picks, maybe just because 16 finishes हैं, which is just one less than the assaulter, and I feel that's great. साथ ही साथ टाइसन की तरफ से भले ही हमको स्टार्टिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली, 3 ही फिनिशेस हैं, बट वी सी कि एज अ सपोर्ट प्लेयर अगर उनकी टीम को उनके हेल्प चाहिए थी यूटिलिटीज में, ही वुड हैव डन दैट. अपनी टीम्स को सप्लाईज प्रोवाइड करना, he would have done that wonderfully. And overall, hungry for kills, I mean, they are proving the worth of their name. Indeed, Cracky. देख लेते उनके performances round 1 और semifinals में in a little more detail. Third आए थे Group F में, fourth, third in Erangel, Miramar and Sanhok respectively. 8 शून्य kills. Sanhok में third with 0 kills. Again, a squad that likes to play very slow. By the looks of things in the semi-finals, they did come first in Sanhok this time. A completely different playstyle with 12 finishes. So, does look like they can play it slow when needed. They're also able to step it up and play aggressive when needed as well. So, Sanhok's gonna be their strong point. Erangel में 4th, 5th. An opportunity there to again step things up for the finals. It's going to be a strong contender moving in to the finals as well. And like you said, 48 finishes. Ye log definitely they are hungry for finishes for sure. So let's move on to the next squad that's going to be joining us in the finals, and wo hai IQ Officials. 45 finishes,
Gamer YT IGL with 18, Starboy playing support with 8. We have VK18 on Scout with 6 finishes. Jixi Assaulter with 10 finishes. And Nani, who's having 3 finishes as an Assaulter. I'm guessing there was one of the substitute assaulters that may have taken over. Let's have a look at IQ officials' performances in a little bit more detail. Second आए थे Group B में with 16 finishes, 6th, 6th and 4th. Consistent middle pack performance in round 1. In the semi-finals, however, they stepped it up massively. Had a very slow start. Erangel में 5 finishes or 12th, but from that point on they just improved and improved. Miramar में 8th, Sanok में 3rd और final map में 1st. 10 finishes के साथ they were able to top the Group B, and that is the sign of a true competitive squad who is able to adapt on the go, and their performances in round 1 and semi-finals show exactly that, Cracky. I mean, देखिए आप बात करते हैं इनके सेमीफाइनल्स के फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले स्टाइल की. भले ही इरांगल इतना अच्छा नहीं गया 12th पोजीशन पे फिनिश ऑफ किया, बट उसके बाद इट जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर. 8th, 3rd and then the first position. Oh, that's great. That's really, really great. And I feel like just like Team Hungry for Kills, जो top 5 थी अपने सारे गेम्स में, चाहे वो राउंड 1 की हो चाहे सेमीफाइनल्स के हो, आई मीन दैट रियली डिडंट मैटर फॉर देम, बट मेन चीज थी वो टॉप 5 में हमेशा से थे. एंड अगर आप देखें इनकी तरफ भी तो इन्होंने अपनी ग्रेजुअली परफॉर्मेंस इंप्रूव करी है. एंड वो जो इम्प्रोवाइजेशन आया है इनका हर एक गेम में, दैट दिस वाज गोइंग रॉन्ग बॉयज, लेट्स जस्ट फिक्स दिस, एंड अच्छे पॉइंट्स लेते हैं, अच्छे फिनिशेस लेते हैं, एंड दे आर हियर इन द टॉप 16. एंड IQ official, I would say, yeah, they have done a great job, and I wish them a good luck for their finale, because आप देखिए बहुत सारी और टीम्स हैं जिनकी तरफ से अच्छे परफॉर्मेंसेस भी थे, बट yeah, they were pretty consistent. हर एक मैचेस में they were able to get 4 to 5 frags. एक इरांगल के मैच में, लास्ट मैच जो इनका था, उसमें 10 फिनिशेस निकाले. So yeah, according to the situation, they showed up. Indeed, Cracky. देख लेते हैं हमारा दूसरा स्क्वाड, वो है Kaizen Esports. 65 finishes. I'm just going to repeat that again. 65 finishes, which is, I think, twice the number of finishes of some of the squads जो हमारे साथ finals में होने वाले हैं. And that is sending a message. Kaizen Esports is not scared to fight, to take fights. वो same, plain and simple as that. अगर इन लोगों को देखे अपने मैप में, you know for a fact, chances are they're going to take fights very proactively. No joke, जो IGL है 12 finishes, Leo Scout 18 finishes, Razer on support with 21 finishes on support. Awesome. Rudra is on Assaulter with 14 finishes. So Kaizen have performed wonderfully well, but with a lot of finishes. However, looking at the next screen, they're gonna paint a slightly different picture. The fact that round 1 they were able to come first on Erangel and Sandhawk, and just over 3 maps had 42 finishes. But the semi-finals wasn't smooth sailing by a large margin. इन लोगों ने आए 4th Group C में with just 23 finishes, जिसमें Erangel में 9th with 2 finishes. Second Erangel में, yes, they had come first with 11 finishes, but the other 3 maps weren't up to the mark from Kaizen, looking at their previous performances. And again, key here is going to be consistency, being able to churn out results like they have in each of those maps in round 1 over 3 days of the finals. I think that's going to be their crucial challenge as well, going into these 3-day finals for the Penta Amateur League in December. Cracky. बिल्कुल. और अब देखिए अंडर प्रेशर जब आए थे ये सेमीफाइनल्स में तो थोड़ी सी लो परफॉर्मेंस देखने को मिली, बट वंस अगेन अपने आप को संभाला,
पहले मैच में भले ही 2 फिनिशेस मिले, उसके बाद 3 लिए, फिर 7 लिए, फिर 11 लिए। दे ग्रेजुअली इम्प्रूव देमसेल्व्स इन द सेमीफाइनल्स। चलिए अब अगली टीम पे नजर मार लेते हैं। हर एक प्लेयर यहाँ पे काइजन स्पोर्ट्स का काफी शानदार परफॉर्म करके आया है। अगली टीम है हमारी लीदल राइवल्स, जिनके टोटल फिनिशेस हैं 32 एंड जस्ट एज यू सेड 2 मिनट पहले कि काइजन स्पोर्ट्स के यहाँ पे डबल ऑफ द किल्स रहने वाले हैं काफी टीम से। सो या काफी टीम से ज्यादा उनके हैं जरूर, बट यहाँ पे लीदल स्पोर्ट्स उनके असॉल्टर के 12 फिनिशेस है, जिनका नाम है लाइट टू ओपी। फिर आते हैं जायरो गॉड, जो कि एक टीम के स्काउट हैं, जिनके 9 फिनिशेस हमको देखने को मिले। डीवी, जो कि एक सपोर्ट रोल अदा करते हैं अपनी टीम के लिए, उनके देखने को मिलेगा 5 फिनिशेस। एंड फैनकर, हु इज द बिग ब्रेन, द आईजीएल फॉर द टीम, गॉट 6 फिनिशेस। सो एक डिसेंट परफॉर्मेंस आई वुड से देखने को मिली है हमको। 7 गेम्स इन्होंने टोटल खेली थी यहाँ तक आने के लिए, एंड इट कुड हैव बीन बेटर। आई मीन देखिए, आप देखते हैं हर एक गेम में अगर यहाँ पे हर एक प्लेयर 2-2 3-3 फिनिशेस भी निकाले, इट्स गुड। जैसे कि हमको पहले गेम में देखने को मिला, जहां पे इन्होंने चिकन निकाला, उसमें 10 टोटल पॉइंट्स इनको मिले। उसके बाद सेनहॉक 5 फिनिशेस के साथ इन्होंने फर्स्ट पोजीशन उसमें भी सिक्योर करी। सो या कंसिस्टेंसी है, दे नो हाउ टू जस्ट गेट इन द टॉप 3, टॉप 2, गेट दोज चिकन्स फॉर देमसेल्व्स। एंड लीदल राइवल्स, व्हाट आई सी हियर कि थोड़ा सा गन गेम अंडर प्रेशर नहीं हमको देखने को मिला। इफ यू सी इन द सेमीफाइनल्स, मिरामार में एक भी हमको फिनिश नहीं देखने को मिला, इरांगल में केवल एक। सो वी एक्सपेक्ट कि कामनेस इन देयर माइंड्स बहुत जरूरी है। Yeah, this is. I don't want to be that person जिसने we बात फिर बार बार बोल रहा है, but you know consistency is I think gonna be the key here. Cracky जिन squads finals में can grind those maps जितने start उतना अच्छा नहीं था. There are many such situations where at the beginning, very early in the map, you end up losing ek do players, or you still are able to grind those top 5 finishes with whatever finish points you can pick up along the way, and those are the ones that will eventually separate the good teams from the absolute best. So we wish Little Rivals all the very best as well. Moving into the finals, let's go over to the next one. We have RCD Esports, 46 finishes. Moksh, the IGL, with 11. Ray, who's on scout, for 3 finishes. Half Knight, the assaulter, with 17 finishes. Has a lot of swag, has a lot of finishes to back up that swag as well. Snipe on support with 7 finishes, and finally we have Rex Boy, who's the sniper, with 8 finishes. Let's have a look at RCD Esports in a bit more detail. First team that actually did not play a map in one of the rounds. I think they weren't able to turn up, or had roster issues, unavailability of players, I'm not really sure, but they did not play the first map in round 1, but came back strong. Second in Miramar, 4th on Sandhawk, 13 finishes. Still managed to come 4th for Group K, having missed one entire map. So shows a team that has the potential, were able to grind their way into the semi-finals, and the performance in the semi-finals was no joke either. Second, 7th, Erangel, Miramar, Sanok or Erangel में with 33 finishes. A lot of finishes in the first 2 maps, but not really able to back that up again in the next 2. Hopefully that's going to change. And another thing that we want to bring up here as well is ये सारे maps जो है वो semi-finals का एक ही दिन back to back हुआ था. So it's also a question of being able to keep your focus over especially the final map, right? It's going to be a grind over 4 hours or so, 4 maps के लिए, and it's important that you don't lose focus at any point of time during these 3 days in the finals. Let's move on to the next squad in line, which is Red X officials. Cracky, the floors are yours.
Red X officials, they have a lot of finishes, like 52 finishes उन्होंने निकाले अपने qualifiers में यहाँ तक आने के लिए राउंड 1 और सेमीफाइनल्स में. एंड असॉल्टर की तो काफी काबिल तारीफ बनती है भाई. 19 फिनिशेस अपनी टीम की तरफ से निकाले हैं रूलर ने. जीनियस जो कि एक दूसरे असॉल्टर हैं अपनी टीम के लिए, उनकी तरफ से 10 फिनिशेस. दे हैव डन अ ग्रेट जॉब. एंड आई फील की कंसिस्टेंसी है इस टीम में. हर एक प्लेयर वाज एबल टू फाइट वेरी वेल. हागिमारू विद दोस आइजलिंग, आई मीन बिग ब्रेन फॉर द टीम, जिनके 12 फिनिशेस हैं. अबुजर जो एक सपोर्ट रोल अदा कर रहे थे, उनके 11 फिनिशेस हैं. एंड लेट्स हैव अ लुक इन डेप्थ कि भाई इन टीम ने, इस पूरी की पूरी टीम ने किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया. बिकॉज इफ यू सी ऑन आरसीडी esports, बिना एक मैप पूरा खेले 46 फिनिशेस के साथ हमको नजर आ रहे थे. एंड दैट वाज लाइक, दैट जस्ट ब्लू अप माय माइंड कि एक मैच नहीं खेला इन्होंने एंड स्टिल दे वर द गुड आउट देयर, दे वर द गुड टीम. एंड अब रेड एक्स ऑफिशियल की अगर हम बात करें तो दे वर एबल टू टेक डाउन 2 चिकन डिनर्स इन द राउंड 1 एंड फर्स्ट पोजीशन पे आए थे. 11 फिनिशेस इनके सेनॉक पे, 8 इरांगल में, मिरामार में भी 8. सो इट शोज कि राउंड 1 तक तो बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ आए हैं. बट इन द सेमीफाइनल्स जहां पे 4 मैप्स हमको देखने को मिले, वहां पे इन्होंने केवल टॉप 3 में 2 मैप्स में यहाँ पाए हैं, इरांगल और सैनॉक में, जहां पे थोड़ा सा हमको बेटर कंपटीशन देखने को मिला. वहां पे इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया. पहला मैप 10 फिनिशेस के साथ, उसके अगले मैप पे मे बी सम बैड थिंग हैपन टू देम. 13 पोजीशन पे एलिमिनेट हो गए केवल एक फिनिश के साथ. और उसके साथ साथ इरांगल पे 11 पोजीशन पे फिनिश ऑफ हो गए केवल 3 फिनिशेस के साथ. सो या टीम रेड एक्स ऑफिशियल्स अगर वो टॉप 10 टॉप 5 तक आ रहे हैं, दे आर गोना डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स. बट हाँ, अगर अर्ली एलिमिनेट हो जाते हैं, जो फुल ऑफ सरप्राइजेस रहने वाला है फाइनल्स, स्पेशली ऑन द फर्स्ट डे, वी माइट हैव अ प्रॉब्लम. Indeed, man. Let's move on to the next one, जो है team Red X, Red X Ross, Red Cross. I don't know. Either one of the two, you can go for it. However, I'm gonna stick with Red X Ross. 40 finishes. Alto, जो assaulter है, 15 finishes. Zeref IGL, 11 finishes. Nickelope on assaulter, also 15 finishes. And we have Arm XN जो support खेल रहे हैं, 17 finishes. Let's have a look at Red X Ross in a little bit more detail here. Round 1 में they topped Group T with 32 finishes. Second on Erangel, first on Miramar, and 13th on Sandhawk. But in the semi-finals, they were able to come 4th in Group A with 26 finishes. Erangel made 3rd, Miramar made 2nd, Sanok made again 8th with 0 finishes. And their Erangel final map didn't go too great either. Were able to come only 14th with 3 finishes. So Sandhawk is probably gonna be something Red X Ross are gonna work on. बहुत सारा homework करना है, and they have a very short time here. 2 और दिन है आज के बाद where they can train in and see if they're gonna be able to plug that weak spot going into the finals on Tuesday. Let's move on to the next squad in line, जो है Retro Esports. Absolutely love the Retro logo there for them as well. 49 finishes. Sparta जो support खेल रहे हैं, 21 finishes. Magma Sir IGL on 8 finishes. Substitute जो substitute नहीं है, in reality वो scout खेल रहे हैं with 12 finishes. And finally Aryan जो assaulter है with 8 finishes. Let's have a look at Retro Esports थोड़ा और डिटेल में. राउंड 1 में सेकंड आए थे ग्रुप ई में, 19 finishes. 11th in Erangel, 1st in Miramar, 3rd on Sandhawk, and got a lot of finishes on Sandhawk as well. And semi-finals में टॉप किए थे ग्रुप ए को with 30 finishes. Erangel में 2nd, Miramar में 1st, Sandhawk में 5th, Erangel में 6th. उतने सारे finishes नहीं थे last 2 maps में, but they were still able to get a top 6 placement on both of those maps, which clearly show that this is a squad that is able to grind results out, Cracky, and that is going to be a quality that's going to take them far, I would say, in the finals of the Penta Amateur League, BGMI. So वो थे 12 squads हमारे पास. फिर भी, if I'm not mistaken, yes, we have 4 more squads. Let's have a look through the remainder ones. Cracky, take it away.
Rush Esports are gonna be the next contender. 57 टोटल फिनिशेस के साथ हमको ये टीम नजर आ रही है जो अब इन टॉप 16 फिनाले में टॉप 16 टीम्स में ग्रैंड फाइनल्स में अच्छा परफॉर्म करती हुई शायद नजर आ सकती है. इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आउट देयर. रश ई स्पोर्ट्स, मयंक उनके एक सपोर्ट प्लेयर हैं, जस्ट लाइक रेट्रो ई स्पोर्ट्स. उनके एक सपोर्ट प्लेयर ने आई मीन 20 से ज्यादा फिनिशेस निकाले हैं. दैट्स इनसेन. और यहाँ पे मयंक 15 फिनिशेस के साथ हमको नजर आ रहे हैं. Shubham, who is the big brain, got 16 for himself and for the team. Amfu, जो एक assaulter का रूप अदा करते हैं अपनी टीम के लिए, उनके हैं 17 finishes. And Pahadi, the last man, the scout, got 9 finishes for the team. अब चलिए एक बार नजर मारते हैं इनके इन गेम परफॉर्मेंस की. हर एक मैप में किस प्रकार का परफॉर्मेंस था, किस प्रकार से यहाँ तक आए हैं. एंड दे एक्चुअली डिडंट प्ले 2 maps. Oh my god, Rush Esports, even after not playing 2 maps, they were able to grab those amazing finishes and yahan tak aa chuke hain. Well, that's Oh. yeah, we talk about consistency, but yeah, Rush, regardless of missing 2, were still able to top Group C. Wow. And that was on the back of amazing performances on Erangel and Miramar, where they managed to get first in both. These kill in pehle do map mein, I think that's something that is going to take them a long way into the finals with them. First there, pehle round maybe Sanok and Miramar mein second and third, so really strong contenders, Rush Esports, going into the finals. Let's have a look at the next squad in line, jo hai Shogun Esports, 47 finishes, Uri Assaulter with 11, Xenon Support with 8, ShaDeSLaYeR, who's the IGL with 17 finishes, the IGL himself stepping up for Shogun Esports, and we have TD69, the Scout with 11 finishes. थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं Shogun Esports का जर्नी into the finals, जो राउंड 1 में आए थे थर्ड in Group G. First in Erangel with 13 finishes, बहुत ही बढ़िया start, but kind of lost the momentum after that. 9th आए थे Miramar में with just 3 finishes, and Sanok में 13th with 2 finishes, which eventually put them in third. अगर इन लोगों का Miramar और Sanok थोड़ा भी बेहतर होता इससे, they would have definitely gotten top in Group G, but no harm, no foul, they still made it through. And semi-finals में भी आए थे third, Group A में इस बार, जिसमें Erangel में आए थे 4th with 2 finishes, 9th in Miramar with 10 finishes, 11th on Sanok with 3 finishes, and Erangel में final map में आए थे first, redemption for Shogun Esports with 14 finishes. So एक बार तो साफ दिख रहा है कि very likely Sanhok is not one of their strong maps going in, which is going to be the case with a lot of these squads that we've seen cracky. We've talked about this again. 2 और दिन बचे हैं इन लोगों को, ताकि it's a short turnaround, but it is still time in their hands to try and make this happen. चलते हैं हमारे final 2 squads की तरफ. पहला है War God Riots, 36 finishes with Ivan Scout 11 finishes, and Tapan Scout with 17 finishes, Poppy जो है Assaulter 5 finishes, और Mighty IGL 3 finishes, landing the total up to 36. So look at their performances in a little bit more detail. Round 1 में आए थे second in Group K. सिर्फ 10 finishes, did not play the first map, but very strong in maps 2 and 3. Indeed, 10 finishes में first Miramar and Sanhok. Group D में semi-finals में आए थे second. Again, entire streak of strong finishes again. Second, 7th, first, and total मिला के 26 finishes. Very strong contender again here. A War God, wishing them all the very best. And that finally brings us to the last squad, Cracky. Yeah. It's gonna be Warlock Esports. इनके 42 finishes हैं, 42 finishes के साथ हमको अब इस टॉप 16 में नजर आने वाली है. स्लिंगर जो कि एक स्काउट पे हमको नजर आते हैं अपनी टीम के लिए, who loves to get that information, 9 finishes के साथ नजर आते हैं.
Killer, who is the IGL 11 finishes के साथ. Devil as a support player was really really good. 12 finishes अपनी टीम के लिए निकाले. And God OP as being an assaulter 10 finishes के साथ. Let's look at the amazing performance throughout the whole round 1 in the semi-finale. If you see, Erangel pehla game, it didn't go well. I mean, they got taken out very early. 13th position पे game से बाहर हो गए थे. But then after not having that great match, उसके बाद they performed really really well on Miramar. 15 finishes. ऐसा लगता है कि जो इरांगल में गुस्सा था वो मिरामार में निकाल दिया. और उसके बाद सेनॉक में 7th फिनिश किया. बट उसके बाद सेमीफाइनल्स पे आप नजर मारे तो सेमीफाइनल्स के पहले 3 मैचेस दे वर नॉट गुड इनफ. बट इफ यू सी ऑन द इरांगल, आई मीन जो लगता है राउंड 1 का पहला गुस्सा था वो फिर से आके इन्होंने आखिरी गेम पे निकाला और 15 फिनिशेस के साथ they ended up being second. Yeah, indeed. So with that, वो थे हमारा 16 स्क्वाड्स जो खेलने वाले हैं फाइनल्स ऑफ द पेंटा एमेच्योर लीग BGMI के लिए December 2021. It's gonna be one hell of an amazing 3 days spectacle event next week. Let's quickly have a look at what that schedule is gonna be like with the breakdown of the maps. पहला दिन 28th को होगा एरांगल, मीरामार, सैनहॉक और एरांगल. एंड इट्स यही पैटर्न चलने वाला है 29th और 30th में भी. 12 मैप, 5 लाख रुपए ऑन द लाइन प्राइस पुल. एक बार देख लेते हैं हमारा पॉइंट सिस्टम भी. एंड जो लोगों ने BGMI फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को this is familiar territory. ये same point system चलते रहता है हर tournament. It's been a long time. It's been a long time. First को 15, second को 12, third को 10, fourth को 8, fifth को 6, sixth को 4, seventh को 2, 8 को 1, 9, 10, 11, 12 सब 1 points and 13 to 16 0 points. एक finish के लिए मिलता है 1 point. And with that, Cracky, I know we've built the hype for all the viewers and sub viewers I know are waiting in bated breath. देखना है कि कौन होगा पेंटा एमेच्योर लीग का दिसंबर का चैंपियन. 3 दिन होने वाला है स्पेक्टिकल. एवरी डे स्ट्रीम लाइव होने वाले 12 बजे 12 PM. एंड लाइव स्ट्रीम होगा पेंटा esports के लोको, YouTube or Facebook में. So if you haven't followed us on Loco Penta Esports, follow us there. It is Penta Esports on YouTube as well, youtube.com/Penta Esports official, and Facebook page of Penta Esports is where you can catch the action live for the finals of the Penta Amateur League BGMI for December. आखिरी I think piece of agenda left. Cracky, if you had to pick a winner, a potential one, who would it be? Oh, I mean that's a very very difficult question for me. First of all, okay, so we have seen a lot of teams जिसके हमारे पास stats हैं. I mean हर एक team का अलग potential है. Some play, I mean, very aggressively, like Rush Esports, Redx officials, they love to go aggressively. But कुछ teams हैं, they love to play tactically, passive play style. So, I mean, that's very hard for me to guess. I mean, मैं एक को बोलूँगा 15 गुस्सा हो जाएंगे मुझसे. But ठीक है, if I have this situation right now, I'm gonna go with RCD Esports because, I mean, I have seen them playing and I'm gonna pick them. But what about you? Like, what do you have in your mind? I'm gonna pick Kaizen. I think 65 finishes from Kaizen shows for a fact that they're brave enough to take those fights and they're successful doing that time and again. But जो हमने वो breakdown देखे थे, consistency was an issue. So I think that is something they need to find, that sweet spot जहाँ aggressive भी हैं, but they're able to also churn out top finishes time and again as well. And I think that's going to put them in a very good spot in the finals. But before we leave, day 3 जो होने वाला है on Thursday, show से पहले we have one awesome rap performance for you in store from
Aster X. I'm sure जो लोग BGMI देखते हैं उन लोगों को Aster X के बारे में already पता है, बहुत सारे videos कर चुके हैं of raps, and he's gonna be performing exclusively for the start of the final day of Penta Amateur League BGMI. Any final thoughts, Cracky? I mean, I am super pumped and I am super excited. I can't just wait. भाई 3 दिन रह गए हैं, but yeah, it's gonna be very very soon, guys. आप सभी को मजा आने वाला है. If you just enjoyed everything, make sure you like, share and subscribe with your friends and tell them कि Penta Amateur League में आप सब भी participate कर सकते हो. आपको क्या करना है? आपको Instagram पे जाके अभी के अभी Penta Esports को follow करना है. आप फॉलो करोगे, आपको आगे आने वाले टूर्नामेंट्स की सारे अपडेट्स मिल जाएंगे. दैट्स गोना बी सुपर इजी. आप रजिस्टर कर सकते हो pentaesports.com, गूगल पे आप डाल के आप सीधा रजिस्टर कर सकते हो फॉर द अपकमिंग एमेच्योर टूर्नामेंट, एमेच्योर लीग, जो हर महीने आनी है. ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आ रहा है, नहीं, हर महीने 5 लाख रुपए आप सभी के लिए. जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ. थैंक यू सो मच आज आप सभी का आने के लिए. फटाफट से जाइए pentaesports.com पे, आज ही रजिस्टर कीजिए आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए और फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे. Indeed. Thank you so much, Cracky, for joining me. This is ShaDeSLaYeR and Cracky signing off. Cracky फिर से आने वाले हैं आपको 12 बजे ट्यूसडे को, जब स्टार्ट होगा पहला दिन फाइनल्स का. क्रैकी के साथ होगा मायावी टू वॉक यू थ्रू द एक्शन. अब बोलेंगे हम अलविदा. एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीकेंड. मेरी क्रिसमस अगेन टू ऑल द व्यूअर्स ट्यूनिंग इन. सी यू. हैव अ ग्रेट वीकेंड. Amateur League BGMI by Penta Esports waits for you. The final awaits on Tuesday. See you folks there.